you are yourself monitoring the present situation that is happening in Pakistan right now, and the present judicial crisis that Pakistan faces presently. What is your take on it, and how are you viewing this crisis? See, the law is very simple. Article 224, Clause 2 of the Pakistan Constitution states that within 90 days of dissolution of a provincial assembly, elections have to be held. Now, that's a very clear-cut provision. There is no scope for argument about it. Either you follow the Constitution or you say we will not follow the Constitution. If you don't follow the Constitution, then the law of the jungle prevails. Everybody can do whatever he likes. But if you follow the Constitution, you have to abide by it. Yes, sir. But there is an argument, sir, that the present government is making, that Supreme Court of Pakistan does not have the right to give the schedule of the election. That right under the Constitution. Right stays with the Election Commission of Pakistan. So their argument is valid to some extent, isn't it? Listen, the point is that number one, it's a verdict of the Supreme Court. It may be a correct verdict or it may be a wrong verdict. Yet it has to be complied with. No one can say that I don't agree with this judgment because it is not a correct judgment. All right. Because ultimately it comes to that. And the Supreme Court fixed the date for the simple reason that election commission may again fix a very long date. Yes, sir. So to prevent that, the election commission had fixed it for October after earlier fixing it for 30th April. Yes. So election commission cannot be relied upon. All right. So therefore the court decided that to put an end to the controversy, let us ourselves fix the date. All right. But sir, another issue is with the verdict, that the issue of 3-2 and 4-3. Previously, when the verdict regarding the election commission's delay was that two judges, after leaving the bench, in their footnote uh, uh, accepted and said that we agree with the judges who have said that the election should not be delayed, and the verdict they are saying is of 4-3 rather than of 3-2. So there is a very clear I would say disagreement between the bench itself. So this disagreement has led to us to this crisis. So don't you think that the judiciary needs to be more clear or clearer in the verdict? Listen, this is a unanimous verdict. The three-judge bench verdict is a unanimous verdict. And it has to be complied with. Yes. You can't keep around giving excuses for not holding the elections. They said that we don't have funds, we don't have security, all this nonsense. When the article is very clear, what is the difficulty? I can't understand. Yes. But sir, उसमें बहस but की sir, गुंजाइश कहाँ है नहीं सर, जब लेकिन जो इशू सर, ये जो गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो ये है कि गवर्नमेंट ही कह रही है कि अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं, उसके बाद केपी में इलेक्शन होते हैं, फिर जाकर अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होते हैं, तो ये फिर एक तरह से एक रिवायत बन जाएगी कि फिर हमेशा पंजाब में इलेक्शन पहले होगा, फिर केपी में होगा और फिर जनरल फेडरल का इलेक्शन होगा। तो इससे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री और जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जो पंजाब का इलेक्शन जीतेगा ही विल बी एबल टू डिक्टेट द फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन। तो उनका ये कंसर्न है जो वो कह रहे हैं। ये सब बहानेबाजी है। आप आर्टिकल 224 क्लॉज 2 पढ़िए, यू रीड इट। उसमें साफ साफ लिखा है कि विद इन 90 days of dissolution of either the National Assembly or the Provincial Assembly, you have to hold elections. सही। तो ये सब कहना कि नेशनल असेंबली का इलेक्शन अक्टूबर में होगा इसलिए हम नहीं करेंगे, ये सब बहानेबाजी है। ये तो यानी ऐसा हुआ कि जैसे बच्चे होते थे ना, जब हार जाते थे किसी खेल में तो कहते थे अरे चीटिंग हो रही है, हम नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल बच्चों जैसी बहस है। एक फैसला आया है, राइट और रॉन्ग, अब उस पर डिबेट मत करिए कि गलत फैसला है। फैसला है, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड।
पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया है पाकिस्तान में कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं पीडीएम से बात नहीं करूंगा, बाद में उन्होंने स्टांस चेंज किया कि हाँ मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पीडीएम कह रही है कि वी डोंट ट्रस्ट इमरान खान। तो जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इससे कैसे ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया है, मौजूदा सूरत हाल जो हो रही है, इतनी बिगाड़ की तरफ जा रहा है मुल्क, इसको किस तरह आप देखते हैं कि इसको किस तरह ठीक किया जाए? ये देखिए, अल्टीमेट इट इज नॉट अ पॉलिटिकल क्राइसिस, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। या आर्टिकल 224 क्लॉज 2 माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, बस यही सवाल है। और कोई ये सब की इमरान खान उनसे बात नहीं करेंगे, ये सब बेकार, ये इररिलेवेंट बातें हैं। सवाल है कि आर्टिकल 224 क्लॉज 2 को फॉलो करोगे कि नहीं फॉलो करोगे। बस यही इशू है। देयर नो अदर, कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं इसमें भाई। ये सब वो नेचुरली इमरान खान चाहते हैं जल्दी चुनाव हो क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ऊंची है। सही। और वो पीडीएम वाले नहीं चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं वो बुरी तरह हारेंगे। सही। मगर ये सब इरेलीवेंट बातें हैं। सही। रेलिवेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। सही। और कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। बिल्कुल। एवरीबॉडी इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। Sir, being a judge yourself and you have served for decades in India as a judge, sir, जो फैसले आ रहे हैं बेंच के, आजकल तो पाकिस्तान में ये चल रहा है कि बेंच देखकर पता दिया जाता है कि फैसला किसके हक में आएगा। तो ये जो पार्टिजनशिप है जुडिशरी में पाकिस्तान की जो नजर आ रही है, बहुत से एनालिस्ट भी देख रहे हैं कि चंद जजेस का इंक्लिनेशन एक तरफ है, चंद जजेस का इंक्लिनेशन एक तरफ है। तो इस पार्टिजनशिप का नुकसान कितना गहरा और कितना बुरा हो सकता है जो है मुल्क के लिए? देखिए, जजेस में डिफरेंसेस होते हैं, हमेशा हुए हैं, हर कोर्ट में, अमेरिका में भी, इंडिया में भी, सब जगह होते हैं। मगर दैट इज नॉट रेलिवेंट। रेलिवेंट इज कि आर्टिकल 224 क्लॉज 2 फॉलो होगा कि नहीं फॉलो होगा, बस इतना सवाल है। बाकी सब चीजें इररिलेवेंट है। हाउ डू यू सी इमरान खान्स राइज इन पाकिस्तान? बिकॉज पहले तो दो ही पार्टियां थी, उसके बाद इमरान खान साहब आए और उन पर भी इल्जाम लगता रहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से आए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ब्रॉट हिम इन। तो हाउ डू यू सी हिज राइज? देखिए, आई रिगार्ड इमरान खान एज बेसिकली एन ऑनेस्ट मैन, जबकि ये पीडीएम लीडर दे आर अ गैंग ऑफ थीव्स। ये पैनमा पेपर्स में सारा डिस्क्लोज हुआ है। इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने कितने 4 लग्जूरियस फ्लैट ले लिए लंदन में, और कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज हैं, और पैनमा पेपर्स में हैं, और मरियम नवाज भी हैं। ये सब चोर चोरों की जमात है, जबकि इमरान खान इज बेसिकली एन ऑनेस्ट मैन। अब ठीक है, उसने कुछ तोशाखाना में कुछ गलती कर दी, बट दिस इज अ माइनर थिंग। बड़ी चीज जो इन लोगों ने जो लास्ट स्केल रॉबरी करी है, ये पीडीएम, ये नवाज शरीफ की फैमिली ने, और उधर वो आसिफ जरदारी भी मिस्टर 10% कहलाते थे, सब जानते हैं, बड़ा करप्ट आदमी था। तो ये बेसिकली इमरान खान इज एन ऑनेस्ट मैन। दिस इज माई थिंकिंग। थोड़ी सी गलतियां हर इंसान में होती हैं, मगर इट इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट दीज पीडीएम लीडर्स हैव बीन डूइंग। तो अब पाकिस्तान जनता ये समझ गई है कि इमरान खान डिस्पाइट ऑल हिज फॉल्ट्स, उसमें है, सब में होते हैं कुछ फॉल्ट्स, मगर बेसिकली ही इज एन ऑनेस्ट मैन एंड ही वांट्स टू डू वेल फॉर पाकिस्तान। तो पॉपुलैरिटी उसकी मेरे ख्याल में 70-75%, जो ओपिनियन पोल आया है उसमें 70-75% पीपल आर विद हिम, एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज आर सॉलिडली विद हिम। तो लिहाजा इलेक्शन हुआ तो वो बिल्कुल जीतेगा।